Hi people, a very good evening. Uh, we are here to discuss the strategy regarding CLAT. This session is regarding how to go about the CLAT paper 2013. Only 4 days to go. Only 4 days to go to the CLAT paper. So in this session, we are going to discuss how to go about CLAT paper, what are your strengths and weaknesses, how to strategize. So the first thing that we need to know about CLAT paper is, or for that matter, any law entrance examination, specifically CLAT, because you have only 4 days to go for CLAT. 2 or 3 of your law entrance examinations have already happened for this year. So for CLAT, the first thing you need to know is that you have 2 hours, that is 120 minutes, and you have a total number of 200 questions to attempt. So an average cutoff score, if you score say 145 to 150 in a paper of 200 questions, in one 200 question paper, if you get a score of 145 or 150, you are comfortably eligible to get one of the top 3 or 4 law schools, one of the top tier law schools. If you can get a marks of 145 to 150. So for getting that, first thing that we suggest is you do not have to go about to attempt all the 200 questions. The first thing that law aspirants, the CLAT aspirants do is take out per question time and an average time to attempt one question. So what people do is take 120 minutes as the total time and 200 questions as the total questions to be attempted. So what the first important suggestion we have for you is that you have to get 145 to 150 to get into a top tier law school, to get into top 3 or 4 law schools. So what our suggestion is कि अभी तक till now you must have practiced a lot of question papers based on CLAT format, a lot of mocks, a lot of previous year papers, and a lot of stuff is available online as well for your practicing. So by now, even if you have taken 10 out of 18 mocks, you must be knowing what your strengths and weaknesses are. किस section में you have a very good command, be it mathematics, quant का section, or be it English का section. And also at the same time, you know what are your weak sections. जिस section में आपको बहुत ज़्यादा time लगना है, या फिर जिस section से आपको थोड़ी insecurity feel होती है. So what we are suggesting, the first thing to do is, when you get the question, do read all the instructions very carefully. After that, do check if there are 200 questions there in your question paper. No question is missing. But at the same time, when you're glancing, and on the first glance, you should mark out your weaker section. For example, if your mathematics is not very good, so mathematics sections may pick out 3 or 4 or say. Generally mathematics sections में a total number of 20 questions are there. So pick out 7 or 8 easy questions, because एक साल से you are preparing, you are giving mocks, so you know कि आपको mathematics में भी कौन से sections के questions easy लगते हैं या कौन से questions ज़्यादा hard लगते हैं. You can pick out कि आपको matrices and determinants ज़्यादा hard लगता है या speed, time and distance easy लगता है. तो जिस चीज़ पे आपका थोड़ा command है, you can mark those questions and you can attempt those questions पहले से. और जो आपके hard, जो subject से आपको लगता है कि आपका command ज़्यादा नहीं है, जो आपको hard लगते हैं, you can अपने weaker sections में से उस questions को आप mark कर सकते हैं कि this question we keep it for later if we get time. So you have a window of 30 questions जो आप अपने weaker sections में से 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश में से, अगर आपको लगता है इंग्लिश वीक है, या लॉजिकल रीजनिंग में कोई सेक्शन आपको लगता है कि आपका थोड़ा ज़्यादा वीक है, सो यू कैन कीप दीज जो आपके वीकर सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको आप पहले से अलग करके रख सकते हैं कि आपको पता है यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 200 क्वेश्चन. ऑल यू हैव टू डू इज अटेम्प्ट 165, 170 एट मैक्स टू गेट a score of 145, 150, a par score to get into top 3-4 law schools. So you have to attempt at max. Okay. So Nimaya Sharma has got a question. Her question is how to tackle negative marking in CLAT.
So I am getting to that. That's what I am saying. कि because of practice, because of your mock, because of your previous practice, you know what your strong and weaker sections is. आप पहले से जो आपके weaker sections हैं उसमें से जो hard questions आपको लगते हैं उनका आप एक विंडो रख सकते हैं और 30 क्वेश्चन 25 to 30 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं या फिर लेटर अटेम्प्ट करने हैं जब आप पहले अपने कॉन्फिडेंट वाले सेक्शंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं. सो इन दैट केस जब आप पहले ही डिस्टिल आउट कर लेते हैं कि दीज क्वेश्चंस आई एम मार्क कि दीज क्वेश्चंस आई एम वेरी लेस कॉन्फिडेंट अबाउट, आई एम इनसिक्योर अबाउट, तो उनमें सबसे ज़्यादा आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस रहते हैं, उनको आप सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं. एट द सेम टाइम जो सेक्शंस आपको ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं उन सेक्शंस को आप क्लियरली मार्क कर सकते हैं कि अच्छा दीज सेक्शंस आर माय स्ट्रांग सूट, दीज आई विल अटेम्प्ट फॉर. एज वेल एज अगर आप शुरू में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है. ओके, सो नाउ कमिंग टू सेक्शंस. क्लैट के पेपर में 200 मार्क्स के पेपर में यू हैव 4-5 सेक्शन. यू हैव इंग्लिश का अलग सेक्शन, यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, यू हैव मैथमेटिक्स, you have legal reasoning as well as you have general knowledge. So nobody can tell you कि आपका strong suit क्या है या आपका weak suit क्या है. Some people believe their English is very good, some people are very good at mathematics. So we cannot tell you exactly which section to take first. Rather we would say कि जो भी section आपको सबसे ज़्यादा strong लगता है और जो section पे आपको confidence है वो पहले लें, and in that too take those questions जिस पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है at first. For example, if you think your English is very good, English वाले सेक्शन में भी 3-4 सेक्शन होते हैं. There are reading comprehensions, there are vocabulary based objective questions, there are synonym antonym based questions. तो you can easily pick out कि किसमें ज़्यादा टाइम लगना है. जैसे कि reading comprehension में you will have to read the whole passage. अगर आपको रीजनिंग करनी है, पैटर्न बनाना है तो you will have to read the passage at least twice. और उसके बाद फिर आप अपने आंसर डिराइव करोगे कॉन्टेक्स्ट से, उसमें ज़्यादा टाइम लगना है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट द वोकैबुलरी क्वेश्चंस, द सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस एंड अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कम टाइम लगे. इफ यू कैन पिक आउट दीज क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट 40 to 45 मिनट्स में वो सारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे जिनमें कम टाइम लगना है. एज इन अगर जीके सेक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 50 या 30 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसमें से आधे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिन पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आधे या आधे से ज़्यादा. सेम वे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर सेक्शन में होते हैं, इवन लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में भी लीगल नॉलेज क्वेश्चन होते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि हो लीगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. कई बार ऐसा होता है कि सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन देते हैं, बट अगर लीगल और नॉलेज क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो दे कैन बी अटेम्प्टेड इन से 10 to 15 seconds. सो दीज क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव हैं और जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है, डू अटेम्प्ट फर्स्ट अपने फेवरेट सेक्शन में से भी. Okay, so Abhilasha Khanna has got a question for me. She is asking if it is said that mocks are comparatively tougher. So then what is the approx margin between the actual paper and mock? See, abhi when there are only 4 days left for CLAT, you do not have to think about a comparison between what your mocks did and what the actual CLAT paper would have. You know the exact structure of CLAT paper. There would be 200 questions of 200 marks. There would be 0.25 negative marking, and there would be 2 hours. That is 120 minutes. So do not compare it with your mock. Go about the CLAT paper the best you can. Okay, so Bhumika has got a question. Bhumika is saying, I am not at all good at math. What if I leave the math section? Okay, so this is a very good question by Bhumika. A lot of people feel this way. A lot of people feel that their math is not very good and they want to leave the whole section itself. See, generally there are average 20 to 25 questions in mathematics section. So अगर आपने 1 साल या 1 महीने पहले से तैयारी की है, you have gone through the supplements, you have gone through the content,
then you would surely know कि मैथ के सेक्शन में भी what are your strong suits, what are your weak suits. You will know कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन मैं जल्दी कर सकता हूँ, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जो मैं आसानी से कर सकता हूँ, या जिनका आंसर मेरा जल्दी निकालने के चांसेस है. सो पिक आउट दोज क्वेश्चन, मे बी 7 or 8 क्वेश्चन ओनली आउट ऑफ 20 जो कि आप कर सको, जो कि आप अटेम्प्ट कर सको. लीविंग द होल सेक्शन वुड मेक यू वल्नरेबल. आप बहुत लोगों से पीछे आ जाएंगे. अगर उसमें से आप 7 या 8 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हो, तो दैट वुड बी एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स सेक्शन, विच वुड हेल्प यू इन ओवरऑल क्लैट में आपका जो कट ऑफ है उसको हाई रखने में वो बहुत मदद करेगा. सो मैथ सेक्शन के लिए तो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इन द वेरी बिगनिंग, it's completely fine with me. It's your strong suit, do it. Even if you are not very confident about your mathematics, if you think it's not your strong suit, then also do not think about leaving the whole mathematics section. Pick out certain questions जो concise हो, crisp हो, जिनमें कम time लगे और जो आपका strong area हो. In those areas, you can attempt those questions. ज़्यादा time लगाने की जरूरत नहीं है. अगर ज़्यादा time लग रहा है तो skip over that question. बिकॉज अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग इनजस्टिस विद ऑल द अदर क्वेश्चन. यू हैव ओनली 120 minutes एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम इन एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. CLAT is the most important law entrance examination, and you have to attempt all the sections. Don't think this way कि I'll leave this section because this is not my strong suit. आपका strong suit नहीं भी है, आपने वो सब्जेक्ट स्टडी किया है, you have a basic idea. Pick out those questions, कम ही सही, pick out those questions which you can do and which you can easily do. अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट पे मेरा कोई बहुत ज्यादा कमांड नहीं है मैथमेटिक्स पे, उस सब्जेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आया है, then you do not need to do that question. You can leave that question. अगर उसमें ज्यादा टाइम लगना है या वो बहुत हार्ड है, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, बट those टॉपिक्स जिसपे आपकी थोड़ी बहुत भी कमांड है, जो लगता है आपको कर सकते हो, definitely do that. Which section to take first is a very good question. Depends upon your strengths and weaknesses. Some people जिनकी English बहुत अच्छी होती है, they want to attempt the English section at the very beginning. But do keep in mind कि reading comprehension में English section में reading comprehension से बहुत ज़्यादा time लगता है. So if you want बाकी सब attempt कर दो और reading comprehension, so you can save them for later. Because as I said in the beginning, the average question attempt, at par question attempt should be 165 to 170 question. अगर आपने उतने questions attempt किए हैं, तो you can easily get an at par score to get into a top 3 or 4 law colleges. So अगर आप reading comprehension को शुरुआत में ना करके बाद के लिए भी छोड़ देते हो, that would be a good part of strategy. Because anyway, reading comprehensive questions would consume a lot of time. That's a given. But if you are very confident about your English skills, about your analytical skills, about your skills of seeing the pattern in a reading comprehension, go for it. Okay, when we talk about general knowledge section का बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अब हम क्या पढ़ें. Okay, so Sandeep will talk about general knowledge section and how to go about in the last 4 days. Sandeep. Thank you. Hello everyone. Now the most important question बहुत लोग पूछते हैं कि जीएस सेक्शन कैसे करना है आपको in the last 4 days. जीएस सेक्शन में ये रहता है कि I would say there will be 2 strategies. One for the people who have just started, like in the express course, and the people who have started year before or 2 years before. जो लोगों ने पहले तैयारी शुरू की है, उनके लिए I would say that don't go for anything new. Read the newspaper you can, like for the next 4-5 days, because जो current affairs हैं वो current हैं, ठीक है, continuation में है, तो इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं. तो हो सकता है कि current affairs की कोई चीज़ जो 2 महीने पहले relevant थी वो आज भी relevant है, तो वो continuation में कोई न्यूज इवेंट हो सकता है. तो आपको हो सकता है कि अभी आप कुछ पढ़ें, वो एज सच आपको न्यूज़पेपर में पूछ लें. सपोज आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, आरबीआई गवर्नर है, तो हो सकता है कि आप पढ़ें और एज सच आपको पूछ लिया जाए. अभी जैसे आपका सिम्बी में पूछा है लॉ एंट्रेंस में, तो दैट मीन्स करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं. बट जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं
it's important it's not important कि how ammunition you have, it's important कि आप उसको कितने अच्छे से यूज करते हैं. ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, डू रिवाइज ऑल द जीएस सेक्शन. अगले 3-4 दिन का आपका ये काम है कि आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है. देखिए जीएस सेक्शन में क्या है कि 50 में से इफ यू आर अटेम्प्टिंग 40 प्लस क्वेश्चंस, दैट विल बी अ गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू कैन स्किप 8 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस सेक्शन. और अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे जीएस सेक्शन में तो आप उसको इन बिटवीन या एंड में भी कर सकते हैं. डोंट गिव मोर देन 15 मिनट्स टू जीएस सेक्शन. 10 to 15 मिनट्स इज आइडियल, क्योंकि अगर या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा. नाउ द थिंग इज, उन लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी बिल्कुल अभी शुरू की है या एक्सप्रेस कोर्स में ज्वाइन किया है, उनके लिए आई वुड से कि दे शुड गो फॉर लाइक अ स्ट्रेटजी. कैसे कि एटलीस्ट हर सेक्शन में, जैसे आई वुड से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स में, जैसे कि हमने लास्ट ईयर के पेपर्स भी डिस्कस किए क्लैट के, जो जीके सेक्शन है उसमें हमने देखा कि स्पोर्ट्स में लाइक दे विल आस्क यू अबाउट ओलंपिक्स के नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होने हैं, उससे नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे. ठीक है, 2016, 2020 सॉकर वर्ल्ड कप नेक्स्ट कहाँ पे होगा, 2014 का, 18 का, 2022 का. तो इस तरीके से जो स्पोर्ट्स के आपके इवेंट्स हैं, ग्रैंड स्लैम्स का क्या सीक्वेंस है. ठीक है, लास्ट ईयर ग्रैंड स्लैम्स किसने जीते हैं, इस साल जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता है. तो इस तरीके के आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, दैट यू शुड मस्ट गो थ्रू, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तब आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें. और आपका टाइम जो है, यू मेक श्योर कि आपका जीके का सेक्शन आपको कम से कम देना है, ताकि आप वो जो टाइम है बाकियों में यूज कर सकें. और आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने हैं. तो इसलिए हर सेक्शन को आप इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस बार बार एक सेट पैटर्न में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आप उनको जरूर पढ़ लें. जैसे मैंने आपको स्पोर्ट्स का दिया, द सेम वे बुक्स एंड ऑथर्स है, आपका अवार्ड्स हैं कि इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है, नोबेल अवार्ड्स हो गया, आपका इंडिया के अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए. तो इस तरीके से सिनेमा रिलेटेड अवार्ड हो गए. तो इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको आप कर लें, ताकि जो क्वेश्चन एक सेट पैटर्न पूछे जाते हैं उनमें आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो. ठीक है, बाकी रही स्टैटिक जीके की बात. स्टैटिक जीके में आई वुड से कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लें अच्छे से. ठीक है, आपको एक 1000 क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी दिए गए हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट अगर आपको लग रहा है कि 1000 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 4 days टू गो थ्रू, तो आप उनमें कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर्स को दोबारा देख के एक उसमें पैटर्न देके आप उसके अकॉर्डिंगली करंट न्यूज़ भी तैयार कर सकते हैं. और आप ये भी कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं उसको आप जितना हो सके उतना रिवाइज करें, गो थ्रू एटलीस्ट ट्वाइस इन द नेक्स्ट 4 days, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट कर सकें. स्टैटिक जीके में जो आपको मटेरियल दिया गया है उस मटेरियल को जितना अगर आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें. Any questions related to GK section? Okay. Okay, thank you, Sandeep. So, one more thing about GK section. GK section में see, these questions are कि either आपको आता होगा या आपको नहीं आता होगा. So people ask कि whether we should attempt GK section in the first or in between or the last. So my suggestion would be it's a personal choice. For me, I used to attempt GK section in the last, because when I attempted GK section in the beginning, जो questions नहीं आते हैं, those questions used to get stuck in my mind. And for the whole paper, मैं हमेशा सोचता रहता था, somewhere I have seen those answers, I must be knowing those answers.
So that kind of situation is very harmful for the health of other questions in the paper, for the whole CLAT exam. So that for that reason only I used to attempt GK questions in the last. They consume very less time. They are objective. Either I know them or not. So I keep it for the last section. Okay. So now let us talk about logical reasoning section. Logical reasoning maybe we have a lot of type of questions. Syllogism के questions होते हैं, argument based questions होते हैं, strong argument, weak argument or no. So for logical reasoning sections, Rahul sir will talk about it. Okay, in a few moments, in 2 or 3 minutes. So logical reasoning का भी जो section है, लॉजिकल रीजनिंग का भी जो सेशन है उसमें भी आपको देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग सूट क्या है और आपके वीक सूट क्या है. अगर आपको लगता है कि सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी डिराइविंग पावर अच्छी है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, सो डू गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन द बिगनिंग. बट कीप इन माइंड कि अगर आपको कुछ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, कुछ अगर आपको फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपका होल्ड अच्छा है तो डू दोस. अगर आपको सिलोजिज्म में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है सो डोंट गो फॉर दैट. कीप इट फॉर लेटर. एंड लॉजिकल रीजनिंग में नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं. कोई बहुत ज्यादा अगर लेंथी क्वेश्चन लग रहा है या आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लग रहा है तो यू हैव टू लीव इट फॉर लेटर पार्ट. और अगर आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है तो उसको आप फाइनली छोड़ने वाले सेक्शन में भी रख सकते हो कि एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग 165 to 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट वुड बी एट पार, वुड बी बेस्ट. अगर आपको टॉप 3 और 4 लॉ स्कूल्स में एडमिशन चाहिए तो 165 और 170 का अटेम्प्ट इन बिटवीन इज सफिशिएंट. Okay, so do we have any question relating to okay, logical reasoning? Rajat Sangwan has got a question. He is asking how do we approach questions relating to syllogism. Okay, so Rahul sir will talk about how to go through about syllogism and other structured questions and concepts. So please. See, Rajat, when you talk about syllogism, the simplest approach is to read the question first, frame in your mind what the question is trying to tell you, and only then go to the options, look at the options, and confirm which of the options matches what you were thinking. Now, in your classes, and even in your study material, you would have seen various Venn diagrams being drawn for different questions. Now, Venn diagrams can be very helpful in if you realize that no one diagram will satisfy any particular given set of statements. You will have to consider all of the possibilities. Venn diagram, if you realize this, that many different diagrams can represent the same set of statements, then that approach can be helpful for you. Do note though that the Venn diagram approach will take up a lot of time. If you just visualize in your mind what the statements are trying to tell you, that will save a lot of time for you. So visualizing what the statements are trying to say is the best approach. The second best approach, of course, would be going by the Venn diagram approach, using the Venn diagram method. Another approach that some people have is that they read the question, then they go to the options and they try to negate each of the options. For example, if I'm given a statement like all apples are fruits, all fruits are fresh, then if I go to the options, if there is one conclusion, one suggested conclusion which says something like all fresh are fruits, instead of trying to look at the answer directly, you should try to negate this and see if negating this contradicts any of the given statements. If I say all fresh are not fruits, then it does not really violate any of the statements given in the given among the premises. In that manner, you can straight away see that this conclusion is only a possibility at best. It cannot be a certainty. That is one approach that many people again have.
Okay, any further questions on logical reasoning, anyone? Okay, thank you everyone. I'll hand over to Harsh. Yeah, thank you, Rahul. So, I saw a question previously regarding legal reasoning or legal aptitude section. So, legal aptitude section, first of all, everyone must be knowing. If you do not know, kindly keep in mind, सबसे important section होता है legal aptitude section. Why? Because in case of a tie, the person who scores more in legal aptitude section gets the preference. It's the rule in CLAT. अगर आपके लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में ज्यादा मार्क्स हैं और इट्स द टाई दोनों के बराबर मार्क्स हैं तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है. Okay, so Himalaya has a question on logical reasoning. Let's get back to logical reasoning. Her question is how to attempt the questions regarding weak and strong arguments. Okay, Rahul. See, for weak and strong arguments, you have to remember two things. First of all, you are not required to make a judgment between the two arguments which are given to you. You are not required to choose which of these arguments is the better one. So, both of the arguments may be strong, both of the arguments may be weak. All that you have to see is whether the given argument is directly linked to the topic and is quite relevant, is direct and relevant. That is all that you need to check. So again, a very good approach for this type of question can be where you try to look at the different possibilities which exist. For example, if you talk about a certain step that can be taken, what are the possible benefits of that and what are the possible losses? Whatever the argument talks about, you need to assess whether the benefit over there would outweigh the losses, whether there are other possibilities which may lead to the same kind of gain without the incumbent losses and so on. So try to understand the different possibilities which are present, and on that basis you can judge whether the argument is relevant, if the argument is relevant it will be strong, otherwise if it is not relevant or if it is only indirectly related then it will be a weak argument. Okay, thank you, Rahul. Thanks a lot. Okay. Okay, so Rajat Sangwan is asking, is it true that science students are preferred when scores are equal? So this is completely wrong. This is completely false. Clearly, CLAT committee has provided that in case of a tie, the marks of legal aptitude sections would be taken into consideration. So science students को prefer करने वाली जैसी कोई बात नहीं है. Okay, and a few people have asked me कि can we attempt legal aptitude section in the beginning? So my answer to this question would be identify your strong suit. You have to identify your strong suit. आपने पहले attempt किए हैं पेपर, mocks attempt किए हैं, previous year question papers attempt किए हैं. You would definitely know कि is legal aptitude your strong suit? Is legal reasoning your strong suit? Analyzing and coming to a conclusion, coming to a correct option, is it your strong suit? If you are very confident, see, anyway, legal reasoning questions are long questions, are lengthy questions, time-consuming questions. But still, if you are very confident about your legal analytical ability, I would say go for it. Go for it in the beginning. There is nothing wrong in going for the legal aptitude section in the very beginning. In fact, once you are done with the legal aptitude section and provided it went comparatively well, you would be very high on confidence and other sections का attempt जो हो वो थोड़ा एक ज़्यादा vigor के साथ होगा. Okay, so Archana has got a question. She is asking only 4 days are left. Only 4 days are left for CLAT. So what should we do in these 4 days? So the first thing that comes to me in my mind in these 4 days, if you are a plus batch student, if you have been preparing for 1 year or more, do not consume any more knowledge.
You have consumed a lot of knowledge. Focus on revision. Do read newspapers, do read current affairs stuff, but apart from that, do not stress yourself, do not try to consume extra knowledge. Okay, Ekansh Tyagi has got a question. Okay, so first of all, Sushant is asking whether we will be given extra time for filling the OMR sheet. So Sushant, kindly note you will not be given any extra time. 2 घंटे में ही आपको सब कुछ करना होता है, from the very beginning assessing the paper to attempting it. So you would not be given any extra time for filling the OMR sheet. आपको उन्हीं 2 घंटे में करना होगा. Please take note about this. So I was saying, do not consume extra knowledge in these 4 days because जितना आपने knowledge consume कर लिया है वो काफी है. You are not giving a JEE exam जिसमें बहुत vast course है या बहुत vast syllabus है. Your syllabus is not very vast and you have been practicing. तो अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत तो confidence ही आ गया होगा. It does not matter how much ammunition you are carrying. It matters how well you use it in your fight. अगर आप एग्जाम में जितनी आपकी नॉलेज है उसको अच्छे से यूज करके 160, 170 तक अटेम्प्ट कर देते हो अच्छे से, देन मोर देन नॉट चांसेस आर कि आपका अच्छा लॉ स्कूल निकल आएगा, आपको टॉप टियर लॉ स्कूल मिल जाएगा. सो इफ यू थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ लीगल रीजनिंग इज योर स्ट्रॉन्ग सूट, गो फॉर लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन इन द वेरी बिगनिंग. उसमें कुछ भी गलत नहीं है. Okay, so Pius Pandit is asking, most of my sections are good. Most of my sections are good, but how can I attempt LR strategically? So as I pointed out, time based paper होता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. As I told you, limit yourself to 165, 170 क्वेश्चन. When you come to logical reasoning section, उसमें भी identify your strong suit. वैसे सिलोजिज्म आपको बहुत अच्छे से आता है, या फिर आप रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, या फिर आप स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इन दैट केस सेक्शन में भी आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कि इस सेक्शन के क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, ये जल्दी हो जा रहा है, ये थोड़े लेंदी है, तो इनको मैं बाद में करूंगा या देखा जाएगा. Okay, Archana is asking, will writing mock test in this 4 days be useful? Okay, so that's a very good question. Going for mock tests in these 4 days would be a very good option. In fact, you should attempt few papers before going to a CLAT examination. If you go to a CLAT examination, first time try to attempt the paper there, you would never be able to manage your time. अगर आपने शुरुआत में, अगर आपने पहले से अटेम्प्ट किए हैं उस सिलेबस पे, उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड पेपर, then and only then you would be able to manage your time very well. So apart from revising, question papers attempt करना would be a very good thing in these 4 days. Okay, and people are asking, what if they are not good in English? Okay people, if you are not very good in English, ज़्यादा unconfident, underconfident फील करने की जरूरत नहीं है. Go and give the paper very confidently. आपको इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट तो करना ही है. जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको अपना स्ट्रॉन्ग सूट्स आइडेंटिफाई करने हैं. इंग्लिश पेपर में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे. अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग फास्ट है या आपकी कॉन्टेक्स्ट डिराइविंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, देन गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन एज वेल. अदरवाइज आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, और जो सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सब पहले कर लो. ओके, एंड नाउ अंशिका गुप्ता हैज गॉट अ क्वेश्चन, हाउ टू गो अबाउट वोकैबुलरी. ओके, वोकैबुलरी के केस में आई वुड सजेस्ट कि अभी आप इन 4 दिनों में अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा कंसिडरेबली इंप्रूव नहीं कर सकते हो. टाइम वुड बी अ फैक्टर व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी. सो अभी तक आपकी जितनी प्रिपरेशन है दैट इज वेल एंड गुड इनफ. अपने जो आप रिवाइज करिए बहुत ज्यादा वोकैबुलरी के लिए. अपने जो लीगल सप्लीमेंट दिए हैं उन्हें पढ़िए. और वोकैबुलरी के लिए बेस्ट थिंग इज रीडिंग, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है. अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है तो उसमें से आप वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट देख के
प्रसंग देख के समझ के उससे डिराइव कर सकते हैं. अगर नहीं होता है तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिए. एज आई सेड 165, 170 questions are the max that you need to attempt. Identifying your strong suits and your weak suits would be your best chance. Okay, P. Kumar is asking, I get a lot of negatives. How to get hold of that? So I said, as I said before, you have to identify your strong suits and weak suits. Okay, Sandeep will take this question. Sandeep, Look, the problem, so I got, okay, not a problem. Look, when you get a lot of negatives, you just see, you can attempt the paper in two ways, like 2 sessions. First, you'll see you have 4 sessions of 50 questions each, and just glance through the paper, select those 15 to 20 questions which you know, in which you are very comfortable, and you need a minimal effort of yours to attempt those questions. So try to divide the question paper into 3 parts, like the questions which you are very comfortable with, the questions which you are not at all comfortable with, which you think that you can't attempt. Okay? The third one is the questions which you think that if you'll attempt those questions, you'll be able to solve those questions. So to get hold of these negatives, you have to divide the paper into 3. First of all, attempt the paper which those sections and among those sections the questions which you are very comfortable with. Then attempt the questions which you think that you are very comfortable. Now the negatives. Video, audio. Okay. The second thing is negatives कहाँ पे होते हैं ज़्यादा. देखिए, अगर आप मैथ्स अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ आपके नेगेटिव्स होने के. ठीक है. सेकंड थिंग इज कॉम्प्रीहेंशन और जीके सेक्शन. तो जीके सेक्शन में मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हैं, पहले आप वो क्वेश्चंस करें. सेकंड, अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है 50-50, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. जो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. ठीक है. ये नहीं कि हाँ आप सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, you have to attempt 170, so you have attempted only 150 or 160, go for the next 10 questions कि आप उसको कर दो. ठीक है. ये मत करना कि आप सिर्फ करने के लिए 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो. तो दैट अगर आपको जीके क्वेश्चंस में अगर 50-50 लगता है या उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में आपको 50-50 चांसेस लगते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. बाकी कॉम्प्रीहेंशन और बाकी जो सेक्शंस हैं, एज सेड बाय माय कलीग हर्ष, कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, उनको जल्दी से जल्दी करके आपको नेक्स्ट सेशन पे आना है, जिसमें कि आप मिडल वाला पार्ट विच आई हैव टोल्ड यू. I'm handing over to my colleague. Okay. Thank you, Sandeep. Okay. So the next question has been asked by Soumya. Soumya is asking, is it compulsory to attempt all the questions in math section? So Soumya, as we discussed before, math section में, or for that matter हर section में, you have to identify your strong areas, your weak areas. अगर mathematics section में at an average 20 या 20 या 25 questions आते हैं, उसमें से अगर आप कुछ एक एरियाज निकाल सकते हो जिसके क्वेश्चंस आप रीजनेबली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, या बेसिक कैलकुलेशन वाले, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो भी क्वांट में रहते हैं, दीज क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजी टू मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड अदर हार्ड स्टफ. सो अपने जो इजी क्वेश्चंस है, डोंट थिंक अबाउट लीविंग ऑल द क्वेश्चन. और इनफैक्ट अगर आप सारे क्वेश्चंस मैथ्स में अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपका मैथ स्ट्रांग है, वेरी वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप मैथ्स पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू फील अ लिटिल इनसिक्योर अबाउट मैथमेटिक्स, देन डू टेक आउट द इजी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट दोज ओनली. बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है और आप थोड़ा भी गड़बड़ाए तो आपके टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो सकती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी मैनेजिंग योर टाइम. Okay, so one of the questions has been asked कि I got last mock में I got 70 marks, any chance for NLU? So
dear students, stop comparing your mock scores with your CLAT score. Mocks को भूल जाओ. आपने अगर NLU B का AILET दिया है या नहीं दिया है, सिम्बी का पेपर दिया है या नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Only 4 days to go for CLAT. अपने मॉक से कंपेयर मत करो, रिवाइज करो, and don't think if I have a chance to get into a law school or not. Right now is not the time for it. Give your best. अपनी बेस्ट मेंटल कंडीशन में होके जाओ, अपना बेस्ट दो. अगर होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा. अभी से थिंकिंग अबाउट वेदर आई विल गेट इनटू अ लॉ कॉलेज और नॉट, अभी से उतने दूर का पिक्चराइज करने से आपको कोई फायदा नहीं होना है. आपका अटेम्प्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आएगा, थोड़ा सा हिंडरेंस ही आएगा. सो डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. Okay, any more questions? Rajat ने लिखा है, with all due respect, can somebody answer my above said question? Rajat, please note, अभी यहाँ पर more than 100 people हैं, and every second there are 5 to 10 questions coming. So finding your question, previous question would be very hard. एक बार वापस से पूछ लेंगे please अपना question so that we can see it. Okay, so Yash is asking if we have joined crash course, then what to do? See, dude, you have joined a crash course. That does not mean कि you are less than anyone else. You prepared for 1 good month. You have given mocks. You have attempted all the sections in mock. You have studied all the subjects provided in your center, in your PL center. So don't worry. Be confident. Give your best. कोई गड़बड़ नहीं होगी. And God help you, God wish you, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा. Okay, so the next question is from Ishita. Ishita is asking, I am an express student. I have been preparing for CLAT for 1 month. So how should I go about in these last 4 days? See, as I have been telling you from the very beginning, अगर आप एक्सप्रेस के स्टूडेंट हैं या आप प्लस के स्टूडेंट हैं, don't try to consume any more knowledge now. Don't try to increase your knowledge base. Go for revision. Go for attempting, practicing the papers जो previous years के पेपर हैं या जो आपके मॉक हैं. These things will very much help in your time management. See, as पहले भी बोला कि कितना एमिनेशन है आपके पास, उससे ज्यादा ये मायने रखेगा कि आप अपने एमिनेशन को कैसे यूज करते हैं. तो अभी नॉलेज बेस ज्यादा इंक्रीज करने के बजाय उस नॉलेज बेस को कैसे अच्छे से यूज करना है, उन स्किल्स पे काम करना ज्यादा जरूरी है. ओके, सो हिमालय शर्मा इज आस्किंग, इज इट अ परसेंटाइल बेस्ड इवैल्यूएशन? नो, क्लैट में कभी भी परसेंटाइल बेस्ड इवैल्यूएशन नहीं होता है. लाइक बिजनेस पेपर्स, बिजनेस स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी तरह कभी भी परसेंटाइल बेस्ड पेपर नहीं होता. यू गेट योर मार्क्स आउट ऑफ 200. And as I said in the very beginning, 145 to 150 is at par score, is a very good score, would get you into top 3 or 4 law schools. There are hardly any chances that you'll be if you'll go by probability, that if you have like 1/4 probability of getting a question correct, then it will like cancel out the things. So don't go for like guesses. Even if you are sure about 20 questions in GK, 20, 25, 30 questions, or you are confident about 20, or as you said 10 to 12 marks, then go for it. Don't go for guesses. Yeah, you can go for guess in the GS section only if there is
On 10th of May, don't consume any knowledge, don't even attempt papers. Do a little bit of revision, but don't attempt papers on the last day, just the day before appearing for your CLAT. On that day, don't attempt question papers, don't attempt mock. Do it till the last second day. 9th May, if you are attempting question papers, that would be very good for you. That would be very healthy for you. It would help you in assessing yourself. What are your strong subjects? And even in those subjects, what are your strong? कौन से questions आप ज़्यादा अच्छे से attempt करने में capable हो? You would understand a lot about your status regarding the CLAT. Okay, so Himalaya Sharma is asking, what do we revise a night before examination? Good things to be revised would be go through your legal content का जो supplement आपको दिया गया है. Go for basic current affairs. ऐसा ना हो कि last दिन आपको ये नहीं पता हो कि Chief Justice of India कौन है या फिर Attorney General of India कौन है. Do go for constitutional authorities की जो post होती है judiciary में. At least you should know all that. Okay, so Archana is asking how much time should be allotted to each section on an average. Archana, this question does not have a strict answer. I cannot tell you कि 30 minutes हर section को दो या 20 minutes हर section को दो. As I am saying from the very beginning, identify your strong suits, identify your weak suits. हाँ, GK section के बारे में I can tell you, since GK section में all the questions are objective, either you know them or don't know them, so GK sections को आप कम time दो. Average 15 to 20 minutes would be ideal, or rather 10 to 15 minutes से ज़्यादा would be a waste of time. हाँ, and one more thing to be kept in mind is कि ऐसा मत करिएगा कि पहले question papers में you attempt, question paper में attempt किया and last में आप OMR sheet में circles draft कर रहे हैं. That would consume more time और उसमें गलती होने के भी chances ज़्यादा रहते हैं. एक आंसर अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपके बहुत सारे आंसर्स wrong होने के भी चांस रहते हैं. So जब भी आप attempt करो, आप सीधे OMR sheet में ही attempt करो. पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने के बाद OMR शीट काले करने में आपको गलती हो सकती है. वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है. जैसा कि मैंने अभी बोला कि लीगल जनरल नॉलेज सेक्शन को 10 to 15 मिनट्स वुड बी वेरी गुड. पेपर देखो, अगर आपको जैसा कि पिछली बार हुआ था सारे 50 लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, then you clearly understand that you would have to give considerably more time to legal aptitude section. और उसमें फिर आपको 30 to 35 minutes would be ideal. अगर सारे उसमें legal reasoning questions हैं, कोई उसमें objective question, legal knowledge question नहीं है. वैसे भी और पूरे on average पूरे पेपर के लिए भी मैंने बता रखा है कि when you are glancing over the paper in the beginning, do mark out those questions या mark out those sections जिसमें objective questions ज़्यादा हैं और जो आपको easy लगता है. So that way आप GK हो गया, English के objective questions हो गए, legal knowledge के objective questions हो गए, even maths के objective questions हो गए. इनमें जिनमें कम time लगना है, जो objective questions है, maximum 10 to 15 seconds are taken into attempt, उतना time लगता है. So 70 to 80 questions जो objective वाले हैं, जो छोटे वाले questions हैं, जो lengthy नहीं है, that can be attempted in the first time for lengthy questions for reading comprehensions or legal reasoning questions. Okay, Devanshu is asking, what if one is very bad in math? He should attempt those or not? This question I have asked, I have answered twice. आप पूरा section छोड़ने के बारे में मत सोचो. Even if there are 20 questions, identify your strong suits, your weak suits.
जो क्वेश्चंस आपको इजी लगे 7-8 ही सही अटेम्प्ट जरूर कीजिए, पूरा सेक्शन छोड़ के मत आइए, नहीं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Okay, so Rajat Sangwan is asking about difficulty level of CLAT 2013. He is asking what according to you was the level of difficulty of CLAT 2013. He wants to analyze his performance in his mocks and stuff. So CLAT 2013 का जो पेपर था that was very lengthy in comparison to previous year's paper. CLAT 2013 का पेपर थोड़ा ज्यादा lengthy था, as it has been pointed out. Legal aptitude section में सारे के सारे legal reasoning questions थे, कोई legal objective question नहीं था. But after saying that, I would like to mention कि paper जो था that was at a moderate level. Quality wise, aptitude wise, paper was not very hard. It was lengthy, but it was of moderate level difficulty. It was not very difficult. Okay, so Amandeep. Okay, so there's this question from P. Kumar. P. Kumar is asking, should we do any guesswork in the reasoning section? So I'm inferring by reasoning section, you mean logical reasoning section or legal reasoning section. If you are talking about logical reasoning section where you do not have to come down to guesswork. All you have to do is come to a conclusion, derive. Use common sense, use your reasoning and come to an answer. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, then leave the question. Guesswork करने की logical reasoning section में
Hello, can you hear me? Hello, 1 2 3 check. Yeah, I hope you people can hear me now. बीच में आवाज नहीं आ रही थी, but then again it's fine. We are still here. We'll be taking your questions patiently. So I'm waiting for questions. Okay, so Madhusmita is asking, she is from Express Batch, and what would be best for her, revising the whole syllabus or attempting mocks in the last 3 days? Okay, so my suggestion to you, Madhusmita, would be do both. A day has got 24 hours. I'm not asking you to study for 24 hours, but in the last days, do go for both. एक दो पेपर भी अटेम्प्ट करो, मे बी मॉक, मे बी प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का आएगा. एंड डू गो फॉर रिविजन एज वेल. अगर आप दोनों करोगी तो दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू. Shraddha is asking, is it sufficient to read just the worksheet and modules of GK you have provided? Shraddha, yes, you have to do that, but at the same time for current affairs, do go for the newspaper. अगर आप न्यूज़पेपर में आज न्यूज़ पढ़ते हो, that does not means कि केवल आपको आज की न्यूज़ मिलती है. That means out of context आपको पिछले 2 महीने में क्या हो रहा है उन इवेंट के बारे में सारी जानकारी मिलती है. So for static GK, your worksheet and modules would be enough, more than enough. उससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको रिवाइज करना is good. And even for current affairs, जो पिछले 2-3 महीने में आपने पढ़ा है उतना रिवाइज करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, that would be more than enough. Okay, Ayushi is asking, I am good in most sections except GK, but I am never able to complete even the question. I know how to attempt. Ayushi, I have been suggesting this from the very beginning. आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको पहले से आपने मॉक्स दिए हैं, उनके बेस पे अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम जाके क्लैट में या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, आप पूरा नहीं कर पाओगे. Okay, so Meenal Parekh is asking, what should be done to make legal more accurate? I mean, it takes place confusion among options. Yes, there is confusion among options. उसके लिए काइंडली नोट कि हमने लीगल एप्टीट्यूड क्लासेस में हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की है. अभी आई डोंट वांट टू आंसर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस. लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए आपको ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए यू हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल एंड फैक्ट. यू हैव टू थिंक विद इन द बॉक्स एंड यू हैव टू थिंक फास्ट एंड कम एंड अराइव एट अ कंक्लूजन. कौन सा ऑप्शन बेटर होगा या कौन सा आंसर बेटर होगा. इफ यू आर वेरी कंफ्यूज, अगर वो नहीं हो रहा है या ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे बेस करने पे आपको दिक्कत ही होगी बाकी क्वेश्चन. Okay, Archana is asking, should static GK be given more precedence while revising or current affairs?
Okay, so static GK is very important. So is current affairs. I cannot give you one favorite कि ये आप अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. बट देन अगेन स्टैटिक जीके आपको रिवाइज करनी ही करनी है. और करंट अफेयर्स अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आपको पिछले 2-3 महीने का खुद ब खुद रिवाइज हो जाता है. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Good luck for your CLAT examination. I don't see any more questions coming. I'll wait for 2-3 more minutes. If there are more questions, I would be sitting here. Otherwise, very best of luck to you. Do revise and do good in your papers. Don't think कि क्या होगा, क्या result आएगा. Give your best attempt. Okay, so Priya is asking how to go about questions which are more than one principle, as it takes a lot of time in doing that. So, as I pointed out in the very beginning, from the very beginning, I have been pointing out, you do not have to attempt all the 200 questions. You have to attempt 165 to 70 questions. So, cluster question है जिसमें एक से ज्यादा प्रिंसिपल है, उस पे भी आपका डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना लंबी है. क्योंकि क्लस्टर क्वेश्चंस में नॉर्मली होता क्या है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एक ही सेट ऑफ फैक्ट्स पे. सो अगर आपको जस्टिफाइड लगता है तो उसको अटेम्प्ट कीजिए. अगर आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम लगता है तो डेफिनेटली छोड़ के चले जाइए. अमन अंसारी इज आस्किंग सर वी हैव टू फिल द सर्कल विद पेंसिल और पेन. सो अमन, ये सारी बातें आपको इंस्ट्रक्शंस में क्लैट के पहले पेपर पे लिखी हुई मिलेगी ऑन द वेरी फर्स्ट पेज. वो आपको ध्यान से पढ़ना है बिफोर ग्लांसिंग ओवर द पेपर. अभी मैं आपको ये बता दूं कि पेंसिल से मार्क करना होता है वो हमारे शीट में. बट देन अगेन दिस इंफॉर्मेशन अगर कुछ अलग चीज प्रोवाइडेड है, अगर आपके क्लैट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि पेन से मार्क करो तो पेंसिल से नहीं, फिर पेन से ही मार्क करना होगा. Okay, so this is a very good question. Karthik is asking, when there is a question in English section, like take out the meaning of a word or meaning of a foreign language, and what if we don't know the meaning of word? What can we do that? See, अगर these things are in a comprehension, अगर comprehension में से किसी word का मतलब निकालना है या किसी foreign language term का मतलब निकालना है, Latin doctrine हो गई, तो you can attempt it. अगर आप ट्राई करो तो आप कॉन्टेक्स्ट में से, आप प्रसंग में से, अगल बगल के सेंटेंसेस का मीनिंग से आप मतलब डिराइव कर सकते हो, अराइव कर सकते हो. अगर नहीं हो रहा है तो लीव इट. अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इधर आपको आता है या नहीं आता है. अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है तो लीव इट. Okay, this question is being asked a lot of times कि how much time should be given in the beginning at glancing the paper. As I have pointed out, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, 3 से 4 मिनट बहुत होते हैं शुरुआत में ये देखने के लिए कि सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं और आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से सेक्शंस में आपको इजी क्वेश्चन ज्यादा है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, उनको अटेम्प्ट करने के लिए. Okay, so Aman Ansari is asking, do I need to complete the paper before 2 hours to check the paper again? हाँ, you have to. I have pointed out in the very beginning, you wouldn't be given one extra minute from 120 minutes. So you have to complete the paper in the same period of time and you have to revise it as well.
Okay, so Anurupa Mukherjee is asking what is a good mock score. Anurupa, मैं बहुत बार बोल चुका, मैं एक बार और बोलूंगा, stop comparing your और stop remembering your mock scores. अभी आप केवल CLAT के बारे में सोचो, आपके जो mocks के scores थे उनके बारे में आप सोचने से कोई फायदा नहीं है. For CLAT, as we have told you, if you get like 145, 150 marks out of 200, that would be more than enough to get you into top 3 or 4 law schools. Okay, Priya is asking how much is revision important, as we would have marked all the questions in OMR, hence won't make much of a difference. Priya, kindly note, you mark with a pencil in your OMR sheet generally. अभी तक जितने भी CLAT के पेपर्स हुए हैं या फिर जितने भी पेपर्स हुए हैं OMR में, यू मार्क इट विद अ पेंसिल. सो डू कैरी एन इरेजर. अगर रिविजन टाइम आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो आप उसको इरेजर से मिटा के दूसरे ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं. दैट वुडंट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट डू रिवाइज वंस. आपको रिविजन से फायदा होगा. आई वुडंट सजेस्ट कि आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लो रिविजन छोड़ के. रिविजन करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप करते हो तो मे बी आपकी कोई टैक्टिकल एरर हो गई है या कोई क्लेरिकल एरर ही हो गई है. एक क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाने से भी OMR शीट में आधे से ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं. तो डू रिवाइज वंस, उससे आपको बहुत फायदा होगा. Yes, as Praful is asking, how about taking an educated guess if we have narrowed it down to 2 options? In that case, go for your instinct. If you can narrow it down to 2 questions, so do attempt it. अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है उस क्वेश्चन के बारे में, then don't attempt it. Okay, so there is this question from Vaishnavi who is asking how many mocks to practice. Vaishnavi, you have got 4 days left. At an average, अगर आप दिन में 1 या 2 मॉक प्रैक्टिस करते हो, दैट वुड बी मोर देन इनफ. अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लेबोरियस हो, देन गो फॉर 3 मॉक्स, नॉट मोर देन 3 मॉक्स अ डे. एंड डोंट अटेम्प्ट इट ऑन 10th of May. Don't attempt any mocks on 10th of May. Okay, thank you, thanks a lot. No more questions are coming. Okay, there is one more question. So to get into the last NLU, what should be the marks in CLAT? Okay, to get into the last NLU, general category में जो marks थे, that was around 104. The last general category person got into the law school at 104. So that would be your this time ka we cannot make an accurate guess, but anything above 100 would definitely get into your law school. And as I pointed out before, anything above 145, 150 is a very good score, is an at-par score to get into the best law schools of India, the premier law schools of India, top 3 for law schools. Okay, so that's all for today. A very good luck for your CLAT examinations. I cannot see a lot of questions more. यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा questions और नहीं आ रहे हैं. Shreya Yadav is asking कि are there any tricks for CLAT? So as I pointed out to you कि अगर आप practice करते हो, अपनी strength और weaknesses देखते हो, तो आपको कुछ skills आ जाएंगी, थोड़ा जल्दी करना आ जाएगा. There are no theoretical tricks जो मैं आपको बता दूँ और आप CLAT में उससे अच्छा perform कर सके. But अगर आप paper practice करते हो, that would be a lot of help. आपको काफी मदद मिल जाएगी. This question Madhusmita I have answered like 2 times before कि last day पे क्या करना है 11 से पहले. You do not have to go for attempting mocks, light revision current affairs का and no taking stress. Okay, that's all for today. Thank you, thanks a lot, take care, good night, bye bye. Do practice a lot, वो आपको बहुत help करेगा.